Hello and welcome to this morning session. Thanks for joining. Today, we are trying to look at another investment strategy. Hopefully, that will be useful to everyone. The objective of this session is to share one of the strategy which I typically do use for, possibly a swing trade or a short-term trade, which I feel like can be used and extended to everyone because it is now tested. The condition is it needs to be used in a trending market. Sideways market, no, none of the positional strategy will work for sure. So all you need to do is use this strategy in a trending market. So as I said, this strategy can be used in cash market, then futures and options as is with no issues. All you need to focus is just two indicators that we are going to add on to the chart. So I will be hiding this. So let's try and understand what we need to do. So there are two indicators as a part of this strategy. I will show you as to how it can be used for cash, then future market, as well as options chart. Okay, so we can prove that. Only thing is you need to know that none of the strategy will work 100%. So all you need to do is use that and see if it is proving to you. The overall strike rate could be somewhere close to 6 or 7 out of 10. Okay, so that you need to remember. But as we know that possibly those 6 or 7 trades will be more profitable than the one which you are going to see a stop loss hit. Okay, so first what we will do is we will also try to list down the criterias. Okay, so I will add a whiteboard online so you can look at this. Okay, so investment strategy. So one thing we need to do is roughly I would suggest that you do not you don't go beyond a small universe, which is use NSE 500. Okay, so NSE 500 stocks to be used. Then in case of FNO, or in a way, I will say intraday, use only FNO list. Okay, the same strategy can also be used for intraday. Okay,
Then third one is strike rate. 6 or 7 of 10. Okay. Then fourth, why I'm writing, everybody needs to understand and remember all these things very, very carefully. It should not happen that you just listen to this strategy and possibly go and apply to any stock. Hmm? Avoid penny stocks. Okay, less than 50 rupees. I call them as penny stocks. Then follow strategy for entry and exit strictly. What does that mean? If you use this strategy for taking an entry, ensure that you use the same strategy for exit as well. Okay. So that's your entry and exit criteria. Now, next, indicators are free to use on tradingview.com. Okay, TradingView. So you don't need to purchase anything. Use just a freely available tools and platforms. 7. Use freely made available DAO scan to see the list, see the actionable stocks. What does it mean? We have shared a free DAO scan to everyone already on the main group. So all those who wants to use this can use the DAO scan. Let me correct. DAO scan. Okay. Results. If you want to review your own stocks, you can do that as well. Okay. What does it mean is, if you already have a portfolio of, say, let us say 5, 10 stocks, whatever it is, whatever number is there, you can apply the same strategy to check if you need to remain invested in those stocks. But preferable is use
this universe, that is NSE 500, for any new trades. Okay. Uh, Fair enough. So let's go on to the chart and try and apply the indicators. What I have done is, to make your life easy, I just ran this scan this morning. So which is a list of around 25 hour stocks. So out of 41, we have taken the top 25 stocks. We will try to find some of these stocks as to how that strategy works. Okay. So there are around 10 odd stocks. We will try to see either 5 or 6 stocks, because I need to also show you the FNO stocks. Okay. So let's go on to the chart. So first indicator that we will be using is Supertrend. Default is 10 and 3. We need to change this as 10 and 2. Okay. So that's the first change. The reason is it gives you little early entry, but we also need to have another indicator to see as to whether the decision which we are taking has a confluence. What does that mean is, we are using the second indicator to get a confirmation on our trade. So what we will do is, we will use the second indicator. The second indicator is just EMA, exponential moving average, and then we will just change it to 21. Okay. Our setup is ready here. So let's see how it goes. So we'll start with a weekly time frame. Okay. So this is, if I switch it to weekly time frame. Okay. So if we look at the weekly time frame, so we'll see as to how did that work. Hello. Any problem? Anybody? नाही ठीक आहे आवाज येत नव्हता ओके ओके. आता ठीक आहे. येतोय आता Okay, ठीक आहे. Thank you. So we have two indicators. One is Supertrend and another one is an EMA. This has to be used in a trending market. So let me add that as a note additionally. So use this in trending market. Fine. So I'm keeping I'm actually adding those pointers so that you don't miss out. Very, very important. Whatever I'm writing has to be ideally followed strictly. Right? Fair enough. So what we will do, we will go to the scan results. I have already taken the scan results.
So first one is Olectra Greentech. Okay. So we will enter the name as Olectra Greentech. Okay. So let's see. So we will slightly go a little backward because we also need to check whether it has worked or not. And forward testing anyway you can do by using the scan results and the strategy. So the condition is super trend. It turns green when the prices starts moving up or out of the consolidation. Okay, so consolidation is this sideways movement where it is not giving any trend as such. So that's a consolidation. Okay, so this is your consolidation part area. Okay, so this is your consolidation area. Okay. So how do you take an entry? This is a weekly chart. Okay, this is kind of a back testing, and we will also go to the current condition because that is on a daily basis. So if you look at this weekly basis, so I will slightly zoom so that you understand as to how it looks like. Right? Now, if you look at this candle very carefully, so far this indicator, that is a super trend indicator, is red because the prices are trading below this indicator. Okay. As soon as this candle is printed, the super trend goes below the prices, which means that there is something which has happened which is positive, and it has essentially came out of this range bound movement. Okay, so this is a possible beginning of positive trend or uptrend on the stock. Now second indicator is EMA 21. We typically use Fibonacci numbers in the indicators unless there are some hard code defined numbers to those indicators. Okay, so any indicators which we can modify a bit, we will use the Fibonacci numbers in them. So this indicator has given you positive direction, this candle. Okay, and this indicator, which is 21 moving average, also gives you a confirmation because the short term trend is turned positive for this stock. Okay, so your entry will be can be in two ways. One is you become little stricter and take an entry above close of the candle, which changed the super trend indicator. I repeat, you can take an entry in two ways. One is the candle which was responsible for changing the super trend from red to green. Uska high, above this high you can take an entry. That is first way. And the second way will be
Can anybody guess? पंकज Sorry, Ravi. पंकज वो नोट्स में लिख सकते क्या ये पॉइंट? Okay. So let me वो write नोट down. डाउन करने को टाइम लग रहा है, फिर वो मिस हो जाता Okay. नहीं ठीक है. I will write down here on the chart itself. For the first chart, we will write. Okay. So है. Yes. indicators used are नहीं, मेरे को वो एंट्री एग्जिट का चाहिए था. अभी हाँ जो बोला इंडिकेटर्स तो समझ गए, वो करेक्ट. लिख लिया. अभी जो सुपर बोला ना ट्रेंड. तूने कि एंट्री कहाँ लेना है. हाँ हाँ चलेगा. बताता हूँ ना. सुपर ट्रेंड एंड EMA 21. ठीक है. We are just going to use only two indicators and by default volume is there. Fine. Entry, alert candle when super trend changes color from red to green. First opportunity above alert candle when the candle closes above alert candle. Fine. When candle closes above alert candle. Okay, Ravi, is clear? Yes. Yes. Second opportunity is when the prices retest the alert candle. Is this clear? What does it mean? अगर ये कैंडल पे आप बहुत बड़ा रहेगा, so ideally we should try to see if it is getting retested. Let us say 30%, 50% of the current candle. ठीक है. So when the prices retest the alert candle in next few days, weeks, or in short candles. ये क्लियर हो गया रवि? माधवी मैडम Yes. क्लियर झालं? Okay. हो. So these are the two conditions for entry. Now we will see as to how did it work. And we will try to put the additional nuggets if we find any. Okay, so I have written this for you. I will share this later on. So this is your alert candle when the super trend color has changed from red to green. Now above this is the first candle which has closed above this. Okay, but if you don't get an entry here as well as here, then you need to rely on the retest. What does it mean? तो उसके बाद में जो भी कैंडल आएगा वो कैंडल इस जो बड़ा कैंडल है उसके 30% और 50% तक अगर नीचे आ रहा है
So you can find that candle and take an entry. Usually जो भी आपका बड़ा कैंडल रहेगा उसका 30% 50% के आसपास रिट्रेस होता है अगले कुछ कैंडल्स में। अगर वो नहीं होता है रिट्रेस, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल बी एन नंबर ऑफ स्टॉक्स व्हिच यू विल गेट, ओके। बट कंसीडरिंग here we will have two opportunity. What we are doing is I will mark one as the entry above the close of this candle, alt j, okay। so आपका एंट्री यहाँ पे है 108 रुपीज, इसका हाई कितना है 107.15, so 108 I will write, ठीक है। एंड अनदर एंट्री इज रिटेस्ट, सो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आया था इट वाज अ रिटेस्ट अपॉर्चुनिटी। इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा ना तो उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉरी, लेट मी ऐड अनदर एंट्री पॉइंट फॉर यू। तो इसका रिटेस्ट अगर होता है तो इसमें रफली एक 30% तक अगर आता है, 25% तक आता है, स्टिल यू शुड बी ओके टू टेक एन एंट्री। नाउ यू कैन रियली closely note that this candle, when it has broken out of this consolidation, has also seen a very high volume than average. Look at the volumes here in red color, it shows 653k, 6.5 लाख का एवरेज है। और जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ है उस दिन 49 lakhs का वॉल्यूम है, 4.9 वॉल्यूम 9 मिलियन, ठीक है। ये वीकली वॉल्यूम है, वीकली कैंडल है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इफ यू लुक एट दिस, डेफिनेटली यस, it is a good opportunity, so which has actually given you the confirmation in multi-way. So what are those confirmation? One is your candle, okay, the candle color change हुआ है। Second, high volumes, okay, and then additionally क्या हुआ है, इसका रिटेस्ट भी मिला है आपको यहाँ पे और हाई भी ब्रेक हुआ है। तो either of these are your entry condition criteria. So अगर रिटेस्ट पे लेते हो तो you can get somewhere close to 92 rupees, फिर भी बहुत नीचे नहीं आया हुआ है। Otherwise on close it is 108 rupees. Now consider that we have entered at 108 rupees. Now you can just follow this strategy. The strategy is to continue with the prices, okay, the way they are till the time it doesn't close below this super trend, and this is your guideline. So this gives you confirmation. Super trend, it keeps on moving up and up. This acts as a trailing stop loss. In technical analysis, we have something called as trailing stop loss. What does it mean? As soon as you enter into the profitable trade, all you need to do is follow some stop loss. So that stop loss is nothing but trailing stop loss, so that you are able to capture maximum profits. And since we have changed this indicator to 10 and 2 instead of 10 and 3, we expect the prices to take very good support. Every time there is a dip, you are seeing a support. Okay. Now, where will you exit?
the exit point will be again two ways to exit. In fact, three. One is anybody who is comfortable based on the price action, then they can use the price action level exit. So this is your entry, exit criteria. One, price action based. Do we know, Ravi, is there any price action which is available here, which you can use to take an exit? Can you guess by any chance? If no, that's fine. But if it is possible for you to share, then that will be good. Can you see any price action here? Just candlestick pattern, some negativity. Sideways movement for some time. Yeah, that is one thing. Secondly, a candle. So kind of an dark cloud cover just started forming right here. And for this Right. negative candle, you are able to see above average volumes. Okay, so that is kind of a price action basis. Then again, inverted hammer, right? That's one thing. Second way is, what was the second way? The second way will be when prices close below super trend. This is compulsory exit. Okay. This is a compulsory exit. If that happens, then obviously you will have to follow that. Fine. The third thing is, third possibility is when prices close below the moving average 21, or I will write down EMA in short. So we have listed the entry criteria as well as exit criteria for this strategy. Now, if you see here, the entry and till the time there was an exit criteria, look at the possible gains, what we have seen. Long position, above this, we have taken an entry. Okay, your stop loss is initially this candle ka mid, because this is a very big candle. And then roughly to start with, it can be 1:2 to start with. Okay, but if you just follow this strategy, then you don't need to worry, because the stop loss is taken care by this green line, which is your super trend line. So what was the highest profit that you could get is, we will consider this candle ka low. Okay,
So Alt J and just extend this line until this place. So the profit which we could earn was almost 1:4.25. Okay, and look at the duration. We will also check the duration. So date range tool. So we have taken an entry here. The target met was here. So 12 bars is nothing but 3 months. In 3 months, the prices moved from 107 or 108 till 196. Okay, so roughly around 80% profits in 3 months has been delivered by this company. Okay, now what we will do is we will also look at the current price action which is on daily basis. So let us refresh. So I have been seeing this since quite some time, this Electra Green Tech company. Now what has happened is this candle which has opened gapped up, okay, but closed red. So in this case, all you need to do is follow the strategy of entry above this candle high. So this was a use. Okay, so this is your entry point. So the entry point was 713. And if you see, it has also closed above this 21 moving average. तो जो भी कैंडल ने 21 मूविंग एवरेज के ऊपर और ये जब ग्रीन रहेगा सुपर ट्रेंड वहां पे आपको एंट्री लेना है विच इज दिस प्राइस 716. we will consider for the time being 720 as our entry price. And if you look at the stock, it's still trending, अभी भी वो चल रहा है, and it has delivered around 500 points plus so far. कितना ड्यूरेशन हुआ है, यहाँ पे आपका एंट्री है इस कैंडल को. आई विल कंसिडर फ्रॉम हियर यहाँ तक. तो 26 बार्स, तो सवा महीना रफली हुआ है. ओके, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट व्हिच यू हैव अर्नड, व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड, लेट अस सी. तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया है, लेट मी टेक अ लॉन्ग पोजीशन टूल, लॉन्ग पोजीशन टूल. यहाँ पे आपने एंट्री लिया है रफली 720 रुपीज के आजू बाजू. आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का लो और तो ये मूविंग एवरेज. You can consider this moving average as well as a stop loss, and then look at this. The profit is looking somewhere close to 67% so far. Okay, in 26 bars, that is सवा महीने में अराउंड 60% के ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है यहाँ पे यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी. ठीक है, any questions, माधवी, रवि, or anybody on the call? नहीं पंख ठीक है, समझ में आ समझा. गया ये स्ट्रेटेजी, इजी है. Yes, Okay, very this you good. can use. हाँ, this you can use for any higher time frame as well. So daily, weekly, this also equally works on a hourly time frame as well. ठीक है. Now what we will do is we will go on to any of the stocks which are trading in the FNO. So let us say Tata Motors stock, right? And we will see if it also works on a shorter time frame. So shorter time frame is approximately, I will say 15 minutes or 5 minutes, and see if it works. Okay, so ये क्लियर हो गया ना, स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है.
तो ये जो नोट्स है मैं एनीवे मैं शेयर कर दूंगा. I will add this as notes to the strategy itself for everybody's reference. See, the objective is now I think we are able to see some very good stocks that we will get an entry. तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और मिस नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज द सोल पर्पज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी एंड द सेशन बोथ. So I'm hoping possibly you will be able to use this. If you are not traded already in the futures and options, then do not use this in any of the option strategies. A big no. Okay, but if you want to start trading and investing in futures and options, then best thing you can do is at least start with a cash market in FNO stocks on daily basis. What do I mean is, ये जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, तो दिस टाटा मोटर स्टॉक, then this PVR Inox, then what else, Canara Bank, then Tata Motor DVR. They are futures and option stocks, even Denmark, right? So you can use them, but do it in intraday, but cash, right? So I don't want you to use that in the direct future and option. Do not use FNO if you are new to FNO, but want to start. ठीक है, आपको स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं, बट डू इट इन कैश. सो यूज दिस स्टॉक इन कैश. हे कळलं माधवी मॅडम? म्हणजे तुम्ही फ्युचर्स अँड ऑप्शनचे स्टॉक बघू शकता, बट यूज इन कॅश. मग तेच कॅश मध्ये ट्रेड करायचे. पण फ्युचर्स अँड ऑप्शन मध्ये असतो लॉट साईज असतो. सो रिस्क जास्त आहे. रिस्क इज हायर. याच्यामध्ये लॉट साईज इज इक्वल टू 1. सो लो रिस्क. तुम्ही एक टाटा मोटरचा शेअर ट्रेड करू शकता, एक ग्लेनमार्कचा शेअर ट्रेड करू शकता, एक कॅनरा बँकेचा शेअर ट्रेड करू शकता. सो दॅट इज दिस बेनिफिट. फाईन. सो विल गो ऑन टू टाटा मोटर स्टॉक. हे क्लिअर आहे ना? काही डाऊट याच्यामध्ये, म्हणजे काही प्रश्न? What we will do is we will just use this. I will later on share this Tata Motor stock. Okay, even you can see this very carefully. The target is also met. This was the old study in the previous batch. So batch number I think 7. We did this study, and in batch number 8 there was a breakout. Okay. So you can see that there is a breakout and the stock has moved and given the target.
So the breakout was somewhere close to this price, 462, and the current price is 618 rupees. We are also seeing or expecting the Tata Motors stock to reach to 700 rupees, so which is roughly around 15% from now. Okay. So how do we use this in an intraday? So this is daily chart. See, it has beautifully worked on those daily time frame as well. Yeah. And if you look at this, the possible gain was 450 to 600 rupees. So approximately 30% so far. Okay. Now let us go on to the 15-minute time frame. Look at this. If it is the case, I think in this case, I would like to avoid Tata Motors because the single candle is a very big candle, that is 2.5%, which is big single candle in a intraday basis. So I will avoid this. Fine. But what we will do is we will sort this based on the change and we'll see if it works well. So we will see Glenmark Pharmaceutical. Okay. So when was it? 6th. It has given you the trade. So if you look at this candle has closed above the small bearish trend. Okay. And if you take an entry, the entry will actually be on this day. So उसका high mark करके रखो. Your entry will fall on this day. So the price is 655 rupees. Okay. And if you look at this, the prices are currently going higher and higher. Okay. But intraday अगर use करना है तो you will have to close this trade on same day. But if you want to take a very short term trade, say 4-5 दिन का है, 1 week का है, so you will also get similar trades using this strategy. So if you look at this, the current gain using this strategy is, and in nowhere the stop loss is hit. You can see the continuously the prices are above this moving average, and also this green line acts as a stop loss for your trade. Fine. So the stop loss criteria is same whether you do it on weekly, daily, 15 minutes, 5 minutes, or any time frame. So if I consider this as the target, this reward is approximately 1:3.5 plus. Okay. So that's how I think this strategy works on the cash market and even the short term. Does that help? Any questions as to how to use this strategy? Your stop loss will be here. So it is approximately risk reward is 1:7. So you need to use this as your stop loss. The reason why I am using इस कैंडल का लो जिस कैंडल पे अलर्ट जनरेट हुआ है तो उसके लो पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है. ठीक है. मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? इधर 650, एंट्री 655, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, एंड द गेन इज अराउंड 680 690 रुपीज के आसपास है. तो अराउंड 40 रुपीज का प्रॉफिट से. कितने दिन में? जस्ट 2 दिन में. क्लियर हो गया? नाउ वी विल आल्सो सी कैनरा बैंक.
तो कैनरा बैंक में भी देखो, सी अभी इसमें कैसे हुआ है, आई विल शो यू द फॉल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द false criteria, false breakout. Now one thing is, you look at this candle, okay, so ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने आपका कलर चेंज किया है, बट इसेंशियली इसके ऊपर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, बिकॉज देयर इज अ रिजेक्शन हियर. कैन यू सी रवि रिजेक्शन हियर वेरी क्लियरली? यस. Yes. सो यहाँ पे आपका रिजेक्शन था, सो आइडियली इसका ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है. सो इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है, बट देयर इज नो फॉलो अप. We know the follow-up, right? Same color candle appearing the next for giving you an entry. Correct. ये आया ही नहीं है, and then the prices have reversed from there. So this is how you can identify the fake breakouts. Secondly, ये जो moving average है, it has gone horizontal, parallel to the ground, which means this was a sideways market. ठीक है? But now look at this trade, right? You can see the moving average slanting and the angle is typically around 50 degrees के आसपास कुछ एंगल है इसका, 45 to 50 डिग्री के आसपास with the ground. ठीक है, ये ना moving average. Look at this. So this candle will be your alert bar. यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, फॉलो आया ही नहीं, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, बट अगर आप देखते हो तो इमीडिएटली रिवर्सल भी हुआ है. तो इस टाइप से अगर आता है आपको, तो यू नीड टू बी एबल टू फाइंड आउट द रिवर्सल्स. ठीक है, look at this green candle, immediately red candle, again green candle, again red candle, and then prices again came down. So this is one of those situation where I said this will not work every time. So situations like this, if it comes, then you need to quickly exit. ठीक है, now here we will see as to how to take an entry. तो यहाँ पे एंट्री कैसा लेंगे हम लोग? दिस इज द बिग कैंडल ऑन 50-minute चार्ट, 1% का गेन हुआ है. नेक्स्ट कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिया है, सो इसका अप्रोक्सीमेटली आधा कैंडल रिट्रेस हुआ है. सो यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा. सो आई विल यूज दिस लॉन्ग पोजीशन टूल एंड वी विल टेक एन एंट्री समवेयर क्लोज टू दिस प्राइस. ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल पे नहीं एंट्री लेंगे हम लोग, इस बेरिश कैंडल के बाद में इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, छोटा वाला जो कैंडल है वो, एंड देन इस कैंडल का लो इज योर स्टॉप लॉस. एंड इफ यू सी highest level was 1 is to 3.3 is your risk reward. But if you just look at 1 is to 2, that should be, I think, fine. Intraday 1 is to 2 is good returns. ठीक है, that's your Canara Bank. Then another one is if you want to go slightly on a longer term, but don't want to go on a, let us say, daily or very higher time frame, then also you can choose 1 hourly time frame. 1 hourly टाइम फ्रेम में भी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा. जस्ट लुक एट दिस, आपका ट्रेड कहाँ पे है? दिस कैंडल इज योर अलर्ट कैंडल. उसके बाद में आपका इस कैंडल में से कोई भी एक कैंडल पे एंट्री हो जाएगा. योर स्टॉप लॉस विल बी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है. इन 4-5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल पे, प्रिफरेबली ये ग्रीन कैंडल, एंट्री शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन अ ग्रीन कैंडल. लेकिन अगर आप देखते हो तो ये रेड कैंडल है, so you will have to use some price action का logic as well.
ठीक है. So what I will do is I will show you the rejection here. ये रिजेक्शन यहाँ पे है. ओके. देन यू ऑल्सो हैव रिजेक्शन. कहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पे. बिकॉज द प्राइसेस क्विकली मूव्ड बिलो दिस green line, sorry, blue line, which is our moving average. But you can very well see that it has not seen any stop loss triggered as such in this strategy. ठीक है. स्टॉप लॉस क्या है हमारा? ये ग्रीन लाइन है, सुपर ट्रेंड वाला. वो कभी भी हिट नहीं हुआ है पूरे जर्नी में अभी भी. ठीक है. सो अगर अवरली बेसिस पे जाते हैं तो आपका एंट्री कहाँ पे हो रहा है? ये ग्रीन कैंडल ले लो या तो फिर ये ग्रीन कैंडल ले लो. ऑल वी नीड इज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए. तो 4-5 रुपए का एक फर्क आएगा, लेकिन सिंस इट इज इन्वेस्टमेंट, दो इट इज इन शॉर्ट टर्म, you will have to have that kind of a patience and follow this strategy carefully. This is your stop loss. इस stop loss के नीचे अगर close हुआ है तो you need to exit. ठीक है. Now if you look at this, the entry exit criteria, let us say on this blue ये वाला green line candle, इसके ऊपर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है. आपका stop loss is this horizontal green line, and then so far the gains are almost 1:10, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है. राइट. अगर आपको और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ये जो जिस कैंडल को ये जो एरो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने के बाद में ये जो चेंज हुआ है लाइन, उस लाइन का लो should be your stop loss. And if you do not want to take a lot of risk, then you can use this green line as your horizontal green line as your stop loss. ठीक है. तो स्टॉप कितना है? सिर्फ 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस है. और अभी आपका टारगेट कितना आया हुआ है? 34 रुपए का. ठीक है. सो दैट्स अ PSU बैंक, कैनरा बैंक. नाउ इन रिसेंट पास्ट I had clearly said that all PSUs and PSEs are doing good. So this is your PSU bank, another Canara Bank. Just look at this. Same just like Canara Bank, right? इधर भी वही हुआ है ना. Just look at this. इस मूविंग एवरेज के नीचे आया है, बट यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं है. हमारा एंट्री है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री लेते हैं तो 51 रुपीज 55 पैसा इसके ऊपर. सो दिस कैंडल विल गिव यू एन एंट्री, और इवन दिस कैंडल यू कैन यूज एज एन एंट्री क्राइटेरिया, बिकॉज ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है. स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक. लुक एट दिस. अभी भी यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है. तो अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड चेक करते हैं तो दिस इज योर एंट्री. लेटेस्ट से ये तो ये एंट्री ले लो, कोई भी चलेगा. इसका मैं क्लोज एंट्री ले रहा हूँ. एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस. एंड इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट वाला बड़ा कैंडल, तो फिर भी यहाँ पे 1:5.5 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड है. ठीक है. सो यहाँ पे कितना परसेंट आ गया? रफली 14% के आसपास आपके रिटर्न है. राइट. 51 रुपीज का स्टॉक है और 7.5 रुपए उसमें गेन मिला है आपको. सो 15%. एंड कितने दिन में मिला है? लेट अस लुक एट द ड्यूरेशन एज वेल. सो डेट रेंज टूल यहीं पे किया ना हमने, यही टारगेट कंसीडर किया है. सो 23 बार यानी 23 आवरली कैंडल्स. सो 4-4.5 दिन में आपको टारगेट मिला है आपका. ठीक है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एग्जिट आया है कि अभी तक नहीं आया हुआ है? अभी भी आप ट्रेड में हो. और उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस बार
which will go even beyond this. So 1:6.5 के आसपास आपका रिस्क रिवार्ड है अभी भी. So 16%, तो 15% आप ऑलरेडी आ चुके हैं. Now if I look at another stock quickly, Apollo Tyres. Apollo Tyres में अभी भी आप ट्रेड में हो, तो क्विकली पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं. इसका रिस्क रिवार्ड यहाँ से शुरू होगा एंट्री, क्योंकि ये रिटेस्ट हुआ है, बड़ा कैंडल था. सो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया है, ऐसे समझते हैं. ओके, और इसका रिस्क रिवार्ड कितना है, अभी भी आप ट्रेड में हो. तो 1:2.5 के आसपास आ चुका है अभी भी. ठीक है, डज दैट हेल्प? एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? नहीं, ठीक है. So I think that was all. One thing I will quickly show you as to how it will work on the option chart. So I will use Canara Bank का chart. जो एक हाँ बोलो रवि. question, Pankaj. हाँ हाँ. यानी these two indicators, is it हम्म. preferred for hourly or long term? यानी which is more preferable? और आपको both के लिए equal सेम है, depends on सेम है, our choice. सेम है. नहीं, it's your choice. Okay. See, Okay. you may have a liking of trading for 3-4 days a week or so. तो उसमें भी चलेगा, सेम सेटअप चलेगा. आपको लगता है कि you want to have a little longer horizon, then all you need to do is use the long term horizon. So daily chart देखो. Okay. 3-4 दिन का ट्रेड है, देन अवरली चार्ट देखो. अगर एक छोटा सा पोजिशनल ट्रेड लेना है आपको 3-4 दिन में, आई डू नॉट वांट टू स्टिक टू एनी लॉन्गर ड्यूरेशन, देन यू कैन यूज दिस एफएनओ का लिस्ट, बट कैश में ट्रेड. ठीक है, लिस्ट एफएनओ का लेना है बिकॉज देयर इज अ लिक्विडिटी. विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लिक्विड स्टॉक्स. ठीक है. Correct. Yeah. Thank you. Okay. So I will quickly go on to the chart and I will show you how it works on a option chart as well. So option chart हम लोग कौन सा देखेंगे, जो ऑलरेडी, ठीक है चलो कैनरा बैंक का देखेंगे. कैनरा बैंक का ऑप्शन चार्ट है. करंट प्राइस इज व्हाट कैनरा बैंक का 333. सो एज्यूम करो कि हम लोग 330 का कॉल देख रहे हैं. ठीक है, ठीक है. सो 330 का कॉल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड, एक मिनट इसको कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे शायद. And then I will go to 15-minute chart. ठीक है. So look at this. So ये कैंडल है, इस कैंडल ने आपका अलर्ट बार दिया है. So इस कैंडल के ऊपर आपका जो भी कैंडल जाएगा, आपका वहां पे एंट्री होना चाहिए. ठीक है. सो इस कैंडल पे आपका यहाँ पे एंट्री हुआ है. इसके ऊपर जैसे ही उसके ऊपर जाना, ट्रेड करना शुरू कर देता है, यू कैन एंटर. दैट इज वन थिंग. सेकंडली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपका एंट्री आना चाहिए. सो आपका, अगर मैं ये चेक करता हूँ लॉन्ग पोजीशन के लिए, सो इसके जस्ट ऊपर आपका एंट्री है. स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा आपका, इस कैंडल का अलर्ट कैंडल का लो. सिंस इट इज ऑप्शन, obviously it will have its lot size, so risk will be higher, but I am sharing for those who are actually already trading in the futures and options. So
If you just keep on following, I will not go to this to just show कि कितना कैसा चलता है करके ये strategy, but I will just be little conservative because I do not want to glamorize this strategy. So it is until 11 rupees. It started at 735 37. So I will consider this as a 7.5. Okay. So I will try to reduce the glamour of this strategy by taking higher entries as well. So 7.5 पे entry लिया and now it has, let us say, सिर्फ 1120 पे close हुआ है. So what we will do is we will quickly look at the what we will see इसका lot size कितना है. Canara Bank lot size. So Canara Bank का lot size कहाँ देखूं? Okay, we'll go to the NSE quickly. ठीक है, then I will use Canara Bank. ठीक है, we'll go to the or let us go here. NBK. And then if you look at this, उसका सबसे छोटा नंबर जो दिख रहा है आपको, that is your lot size. So 2700 का lot size है. Can you see any smaller number than this? No. ठीक है. So 2700 is your lot size. So अगर आप देखते हो, so आपका गेन कितना है इधर? रफली 7.5 से लेके 11 रुपए तक. ठीक है. So 3.5 रुपया मिलता है इसमें. And if you calculate that, so roughly 9,000 rupees is your gain post your taxes and brokerages. कितने टाइम में मिल रहा है ये? ट्रेड का एंट्री कहाँ पे हुआ है आपका? यहाँ पे हुआ है इस कैंडल पे. सो 7 जुलाई को 1:15 बजे का जो कैंडल है उसमें आपका एंट्री है. एंड आपका लेटेस्ट से एग्जिट किया आपने 2:30 बजे. सो फिर भी आपका कितने बजे था एंट्री? 1:15 बजे और 2:30 बजे एंट्री. 1.25 घंटे में आपको दिस इज अ पॉसिबल गेन. एनीवे आई एम नॉट एडवोकेटिंग to go and trade into the futures and options world, but those who are already trading, this can be an opportunity. आपका स्टॉप लॉस कितना है इधर? तो 6.25 और 7.5 सो रफली 75 पैसा. सो so 2,000 रुपए का, तो 2,200 का स्टॉप लॉस है और 9,000 रुपए का प्रॉफिट है. सो रफली 1:4. ठीक है. सो वी हैव सीन दिस. द होल लॉजिक इज using a correct scan results. If you use that carefully, then only you can be assured of the good results. नहीं तो कोई भी आप स्टॉक लोगे और उसको यूज करोगे तो यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स. यू ऑल्सो नीड टू हैव लिक्विड स्टॉक्स. ठीक है. सो लिक्विड स्टॉक्स एफएनओ में ले लो और उस पे ये यूज कर सकते हो आप इंट्राडे में कैश मार्केट में. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द होल स्ट्रेटेजी वाज. कुछ क्वेश्चंस है किसी के बिफोर वी क्लोज? अदरवाइज आई एम हैप्पी टू क्लोज दिस मीटिंग. ऑल गुड?
मंथली पे नहीं चेक करने का, राइट? है वीकली मंथली एंड पे बिलो। चेक नहीं, मंथली पे चेक नहीं करने की जरूरत, क्योंकि मंथ खत्म नहीं हुआ है ना अपना। हम्म। मंथली पे जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस लेते वक्त भी मंथली चेक करना पड़ेगा ना। राइट, ओके। सो डू यू रियली हैव दैट पेशेंस? क्योंकि महीने में अगर आप एक महीना वेट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा इरेज हो जाएगा, हम्म। राइट। एक आधा बड़ा सा ऐसा कैंडल आ गया तो क्या करोगे? यहाँ पे कहाँ तक गया था वो? 13 रुपया 75 पैसे पे गया था, अभी यहाँ पे कहाँ है? अगर आप ये महीना है, मंथली कैंडल है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, राइट। नीचे आ गया। तो फायदा नहीं होगा ना ऐसे करेंगे तो। राइट, तो आपका जो इन बिलो फायदा इज है वो बेस्ट निकल फॉर जाएगा। दिस हाँ, इंडिकेटर्स। करेक्ट। दिस स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर तो सब, राइट, दिस स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, ठीक है, गॉट इट। ओके। सो अगर कुछ सवाल नहीं होंगे तो वी कैन क्लोज दिस मीटिंग देन। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू। चलेगा, नो प्रॉब्लम देन, विल क्लोज दिस। थैंक यू वेरी मच, आई होप you enjoy. Thanks so much. Okay, bye bye. यस, Yeah, Bye. thank you. थैंक यू। Yeah, bye bye.